All right, we can see the visuals there of Indian women's team boarding that bus probably for the ground where this historical clash is going to take place between India and South Africa. Remember that this is the third time when Indian women's team is in the World Cup final and they're all set to create the history. Yasha Kotak is joining us on this story. Yasha, we are seeing the visuals of the Indian women's team leaving the hotel probably for the ground. Tell us about the sentiment there. What are the emotions like? Absolutely, like you rightly mentioned, the third time that Indian women's team is in final. Of course, for some of them, it would be trying to have a comeback of 2017. We are here right outside the D.R. Patil Stadium. Of course, it is a rainy day in Mumbai. In fact, in this very tournament, we've seen how there have been 5 washouts. Hoping fans, they've paid a bomb and have made here for the match. Of course, it's a reserve day for tomorrow, but the fans who've gathered here, we've seen how fans are making their way inside towards the stadium, but we're hoping that the fans actually get to witness the match today and there's no washout. Some of these fans are right here, and like you've rightly said, the Indian women's team has left from their hotel and would be here any time now. We speak to some of these fans and try and understand what are their sentiments like. आप बताइए कि जहाँ देखिए कि ये क्रेज जो होता है यूजुअली मेन क्रिकेट के लिए होता है, लेकिन आज वुमेन क्रिकेट टीम के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं. आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है इसमें टीम में? फेवरेट प्लेयर स्मृति मानधना और हरमनप्रीत कौर. क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार दोनों से? मतलब स्मृति मानधना से रन सेमीफाइनल में नहीं आए, अभी फाइनल में आशा करते हैं कि वो रन बनाए और भारत की बढ़िया जीत हो. Clearly, of course, be it India, be it South Africa, whoever wins, it's going to be the first time that either of them would in fact lift the cup. But yes, it being Mumbai, people who obviously want India to win. आप बताइए कि आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है? अभी जेमिमा रॉड्रिक्स. जेमिमा रॉड्रिक्स खुद मुंबई से है. सेमीफाइनल में हमने देखा था कि 127 रन जो अनबीटन थे वो उन्होंने बनाए थे. तो इस बार ये मैच में से क्या एक्सपेक्टेशन? अभी जो परफॉर्मेंस उन्होंने सेमीफाइनल में दिया है, अभी उनसे वही एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल में भी सेम परफॉर्मेंस आए और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी है. जहाँ हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की जो मैच थी, हमें एक बहुत टफ मैच थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 7 बार कप जीत चुकी है. इस ऑस्ट्रेलिया को हरा के जब साउथ अफ्रीका के सामने आए हैं, लगता है कि ये केक वॉक होगा. एक ना एक दिन तो ये तो होना ही था. हम जब छोटे थे तब से क्रिकेट देख रहे. 2017 में जो सेमीफाइनल था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था. ये तो एक ना एक दिन निश्चित ही था कि ऑस्ट्रेलिया को कब ना कब तो हरा ही सकते थे टीम. तो वो हुआ इस दिन. Clearly, of course, the match against Australia is a difficult one. But yes, all eyes are on the India-South Africa match. You can see in the visuals that it's raining there. What's the weather update? So yes, when you speak of the weather update, so far the rains have subsided. Of course, around 6 o'clock is where there's a possibility of the rains being a little higher. Though around 25% rain possibility is there even during the match time. In fact, throughout the series we've seen how there have been several matches which had in fact had to be stopped in between because of the rains. That could possibly happen today as well. But so far we're hoping that the match would go uninterrupted just with several halts, similar to what happened with the Australia match. आप बताइए, जहाँ हम बात करें इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मुंबई का ग्राउंड है. मुंबई के ग्राउंड पे हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इंडिया जीते. जहाँ इंडिया ने मेन वर्ल्ड कप जीता था वानखेड़े में, तो क्या लगता है कि वुमेन वर्ल्ड कप जीतेंगी यहाँ पे डी.वाई. पाटिल पे? 100%, 100%, 200% वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतेंगी और एक बार हमको दिवाली मनाने का मौका वुमेन्स हमें देंगी. ऑल द बेस्ट टीम इंडिया. इस बार जीत के आना वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में लाना. All the best. We have some more fans here with us. We have a girl here with us. Tell us. Do you think came to support the women's India team cricket? And all the best so much. Tell me, 2017 saw women actually coming on that platform when they've reached the finals. Yeah. Right now, if they win today, will it be a big boost for all the girls, particularly to cheer for these women here? Yes, particularly I have came especially for the women, and I have very encouraged by them, and especially to support the women's team, women's World Cup. India will win. Who is your favorite player? Jamaica Rodriguez.
Jemimah Rodriguez. Clearly, Jemimah. Mumbai fans have a decision That's right right. for Jemimah Rodriguez. So all these people are really bracing for this final between India and South Africa. In fact, Yasha, we can see this early weather update also on our screen, which shows that you can, in fact, at 2 p.m. there are 56% chances of rain, and then of course 3 p.m. 51%, 4 p.m. 42%. So probably by the time you will have match progressing, the rain is likely to be subsided. That's what we can see in that weather update that we see on our screens right now. Now, from our humble beginnings in the Mumbai's Bhandup area to grand stage of the World Cup final, Jemimah Rodriguez's journey has inspired an entire generation. CNN News 18's team caught up with her childhood friends, the same group she played street cricket with growing up. It's raining continuously in Mumbai, but enthusiasm of Mumbai Card has not drained out because today is the final match of a Women's World Cup, and I'm reporting from the narrow lanes of Bhandup, from where Jemimah Rodriguez, the Indian batter, the superstar, started her career, started playing cricket. She spent her childhood here and she started playing cricket here, and you can see all her childhood friends, all people with whom she played cricket, they have gathered here. They are totally prepped up over here and they are demanding that we want the World Cup. Let's go to them, let's meet with them. ये कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए, आपकी बचपन की दोस्त जो यहाँ पे पली बड़ी, यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेला, आज भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल मैच है आज, कैसे आप देखते हैं उसको और क्या यादें आप उनकी बताएंगे? जमीमा को मैं बचपन से जाता हूँ और उनका परफॉर्मेंस स्पिरिट वाला है और हमें पूरा आशा है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी जमीमा को ही मिले। सर, आपसे ये चाहूँगा कि जब बचपन में वो खेलती थी तो हमने देखा गया कि लड़कियां बड़े पैमाने पे क्रिकेट खेलती नहीं है, लेकिन मुंबई की क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा गली क्रिकेट से शुरू होती, फिर वो सुनील गावस्कर जो है जो चिखलवाड़ी में खेले, सचिन तेंदुलकर रहे जो साहित्य सहवास की गलियों में खेले, जेमिमा रॉड्रिग्स भांडुप की इन गलियों में खेली थी। क्या आपकी यादें हैं? जैसे उन्होंने कहा कि कवर ड्राइव उनका स्पेशल था, तो कोई ऐसी मैच वो अगर आपके साथ खेली हो या आपके साथ टीम में खेली हो जो आपको याद हो अभी भी बचपन में और उन्होंने जिताया हो? मैच तो बहुत सारे जमीमा का याद है, मगर एक बात मुझे, हम लोग खेल रहे थे तो उसको एक गेंद लगी थी उनके चेहरे पे, लगने के बावजूद भी वो स्टैंड हो गई और खेली हमारे साथ। जो उसमें जो स्पिरिट है क्रिकेट का जुनून, वो उस समय भी था, आज भी, और उसको आगे भी दिखाई देता है क्रिकेट में जुनून।